Good morning, students. Today we will learn about respiratory system of cockroach according to morphology and anatomy of cockroach. Okay, so the blood of cockroach is colorless. Okay, and due to it, and it cannot carry oxygen to different tissues due to the absence of respiratory pigment. And what is the respiratory pigments? Hemoglobin or hemocyanin. So hemocyanin uh, in many insect their bloods is in present hemocyanin, but in cockroach hemocyanin is absent. So hemocyanin is a respiratory pigment, and therefore trachea system is developed to carry the air directly to the tissues. ठीक है, यहाँ पे जो एयर है वो डायरेक्टली टिश्यूज तक कैरी किया जाता है, पिगमेंट के थ्रू नहीं होता. एंड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ स्पाइरिकल्स और स्टिग्मेटा and trachea and tracheoes. Okay, here we see trachea system of cockroach in dorsal view. dorsal view से trachea system दिखाया गया है. यहाँ पर हमने कि जैसे कि अभी पढ़ा कि कॉकरोच का ट्रैकिया सिस्टम 3 भागों में बटा हुआ होता है, स्पाइरिकल और स्टिग्मा, ट्रैकिया एंड ट्रैकियोस. तो व्हाट इज द स्पाइरिकल और स्टिग्मा? द ट्रैकिया सिस्टम कम्युनिकेट विथ एक्सटीरियर बाय 10 पेयर्स ऑफ ओपनिंग. यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ठीक है, 10 पेयर्स ओपनिंग दिखा रहा है, कार्ड स्टिग्मा और स्पाइरिकल्स. ये जो है ये डायरेक्टली जो है वो इसके जो सेगमेंट है ना, उसके बाहरी तरफ ये एयर से कनेक्टेड रहता है. एंड द फर्स्ट 2 पेयर ऑफ स्टिग्मा आर प्रेजेंट इन थोरेसिक सेगमेंट. जो फर्स्ट 2 पेयर है स्टिग्मा का वो किस में है? थोरेसिक सेगमेंट में प्रेजेंट है. एंड 1 पेयर इन मेजोथोरेक्स एंड 1 पेयर इन द मेटाथोरेक्स. इसमें का एक जो पेयर है वो मेजोथोरेक्स एंड एक पेयर जो है वो मेटाथोरेक्स कहलाता है. एंड द रिमेनिंग 8 पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट. ओके, बाकी जो 8 वो एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है. द स्पाइरिकल्स ऑफ कॉकरोच आर polynestic and holonucleatic and all spiracles are valvular. सभी में वाल्व होते हैं. and each spiracle is surrounded by a chitinous ring called peritoneum, and each spiracles bear small hair-like structure called tracheomes. okay, एंड दे फिल्टर द डस्ट पार्टिकल्स. ये जो है वो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर करते हैं. एंड इच स्पाइरिकल ओपन इनटू अ स्मॉल चैम्बर कॉल्ड एट्रियम. ठीक है, यहाँ हम देख पा रहे हैं स्पाइरिकल ट्रैकियो एंड ट्रैकियोल्स. एंड सेकंड पार्ट इज ट्रैकिया. फ्रॉम द एट्रियम टू ईच थोरेसिक स्पाइरिकल सेवरल ट्रैकिया रन इनसाइड, अंदर की ओर जाता है ये. एंड दे ज्वाइन विथ ईच अदर इन द थोरेक्स ऑफ टू फॉर्म मेनी ट्रैकियल ट्रंक लाइक डॉर्सल सिफेलिक, वेंट्रल सिफेलिक ट्रंक एंड देयर ब्रांचेस. जैसे कि हमने अभी डायग्राम में देखा था, ये जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो यहाँ पर वेसल्स लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एट्रियम. एंड ये एट्रियम जो है वो आपस में जुड़कर जो बॉडी के अंदर है वहाँ पर सिफेलिक, वेंट्रल सिफेलिक एंड ट्रंक एंड देयर ब्रांचेस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दिस ब्रांचेस इंटर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द हेड. और फ्रॉम द एट्रियम टू ईच एब्डोमिनल स्पाइरिकल 3 ट्रैकियल ट्यूब्स. दे आर dorsal tracheal tube, ventral tracheal tube and lateral tracheal tube. And
when we talk about structure of trachea, the wall of trachea is made up of three layers. They are an outer basement membrane, a middle layer of the epithelium, and an inner layer of cuticles. And when we talk about tracheoes, all the tracheal branches entering into an organ end in a special cell called tracheole. And the terminal cell has many intracellular tubular branches called tracheoes. Tracheoes are formed of a protein called trachin, and tracheoes are divided of intima and tenidia, and tracheolar fluid is present inside the tracheoes. The level of the tracheolar fluid varies with the metabolic activity of the insect. Okay, and the level of the tracheolar fluid is more when the insect is inactive, and it is less when the insect is more active. Tracheoes penetrate the cell and are intimately associated with mitochondria to supply oxygen to them. Okay, so exchanges of gases कैसे होते हैं इनसे? The exchanges of gases depends on the metabolic rate and temperature. When air enters the tracheoes, oxygen diffuses faster into the tissues due to its high partial pressure. Okay, and at the same time, the carbon dioxide of tissues, instead of passing into the tracheal system, goes into the hemolymph. बॉडी के जो फ्लूइड होता है उसमें ये मिक्स हो जाता है, and carbon dioxide is carried more quickly into the hemolymph due to its greater solubility in it, and this carbon dioxide accumulates near the spiracles and diffuses into the atrial chamber near the spiracle and goes out in burst through the abdominal spiracles. Cockroach and some other insects such as grasshoppers and beetles exhibit the phenomenon of discontinuous ventilation, and in this mode of respiration, continuous exchange of gas is interrupted by extended period during which spiracles remains closed, and the expulsion of carbon dioxide from the body occur in burst when the spiracles are open. Okay, and second one is the nervous system of cockroach. The nervous system of cockroach is well developed, and it is composed of three parts: central, peripheral, and sympathetic nervous system. Here we see the nervous system of cockroach, है ना, इसमें ये तीन पार्ट में बटा हुआ है, सेंट्रल बीच का, एंड पेरिफेरल दोनों बाजू में, राइट एंड लेफ्ट साइड में, एंड सिंपैथेटिक जो एक जाता है और एक वापस लेके आता है. सो when we talk about central nervous system, it controlled whole body and itself. It is situated in the main axis of the body, and it is composed of two parts, nerve ring and nerve card. यहाँ पे हम रिंग लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और कार्ड लाइक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं. तो दो भागों में ये बटा हुआ होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका. नर्व रिंग इज फाउंड ऑन हेड. यहाँ पर देख पा रहे हैं हेड में नर्व रिंग बन रहा है, ये है ना, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है. एंड बिफोर द टेंटोरियम एंड अराउंड pharynx. Its dorsal part is thick and bilobed and is called brain or सुपरफेरेंजियल गैंग्लियन. इसमें अलग से और कोई ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर नहीं होता है, यही नर्व का रिंग होता है जो ब्रेन का काम करता है. एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री पेयर ऑफ गैंग्लियन
ऑफ हेड। ये जो नर्व्स का जो गांठ लाइक स्ट्रक्चर, नॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसी को गैंग्लियन कहा जाता है। बोथ द लेटरल पार्ट ऑफ द nerve rings are smaller and wider. These are called circumpharyngeal connectives, and it joins brain and hypopharyngeal ganglion. And second one is the nerve cord. It composed of two nerve cords which are emerging from hypopharyngeal ganglion and goes up to posterior part of the body. बॉडी के पीछे पार्ट में होता है, and it is looking like a ladder because it is composed of 9 segment ganglion. Okay, and when we talk about peripheral nervous system, it includes nerve that join nerve ring and nerve cord with various part of the body. And suprapharyngeal ganglion is connected with eyes, antenna, यहाँ पर हेड में है ना, आई के साथ कनेक्टेड है, एंटीना के साथ कनेक्टेड है, एंड लेब्रम by means of 3 nerves. Hypopharyngeal ganglion is connected with other mouth part, head and parts of neck by 3 pairs of nerve. 6 nerves from thoracic ganglion. 5 pairs of nerve is from mesothoracic and metathoracic ganglion enter into various part of its segments. And sympathetic nervous system, it composed of 3 parts: stomatogastric system, spericular system and caudal system. And we talk about reproductive system in cockroach. Male and female cockroach are different in having different types of sex organ, like here we see. And the male reproductive system of cockroach consists a pair of testes, vasa differentia, okay. The male reproductive system of cockroach consists of a pair of testes, vasa differentia, and ejaculatory duct and utricular gland, phallic gland and the external ganglion यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है वो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फर्स्ट जो है वो टेस्टिस, देयर इज अ पेयर ऑफ 3 lobed testes lying dorsoventrically in the 4th and 5th abdominal segment, being embedded in the fed body. The testes are well developed and elaborate structure in young cockroach, and they are full of sperm. And vasa differentia, from each testis arise a thin thread like white vasa differentia. Both the vasa differentia passes backwards almost to the posterior end of the abdomen and then bend forward to meet in the middle and open into an ejaculatory system. And ejaculatory duct यहाँ पर देख पा रहे हैं। The ejaculatory duct is an elongated wide median duct which runs backwards in the abdomen and open but by male gonopore situated ventral to the anus. यहाँ पर ये anus में खुलता है. And utricular or mushroom shaped gland, okay, and it is a large accessory reproductive gland, whitish in color and situated at the junction of vasa differentia with the ejaculatory duct. It has a mass of glandular tubules of 3 kinds. The peripheral long tubules are utriculi majors, and the central tubules are small short tubes are utriculi breviaries, and behind the short central tubules are some short but
more bulbous tubules forming the seminal vesicles filled with sperms. Okay. Phallic or gangliolobed gland. It is long and club-shaped accessory gland, and its interior bladder lies in the sixth segment. And external ganglia genitalia. Some chitinous asymmetrical structure are found surrounding the male gonopore. At the end of the abdomen, there are three phylometers or male gonophytes, which consist the external ganglion, right phyllomores, left phyllomores, and ventral phylomere. Okay. And we talk about female reproductive organs of cockroach. The female reproductive system of cockroach consists of a pair of ovaries, vagina, genital pouch, collateral glands, spermaceti, and the external genitalia. So ovaries, there are two large light yellow colored ovaries lying laterally in the segment 4th, 5th and 6th, embedded in the fat body. Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules. Okay. यहाँ पे आप देख पा रहे हो 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स से बना हुआ है, और ovules containing a chain of developing ova. An ovariole is made up of an epithelial layer resting on a basement membrane and enclosed externally in a connective tissue coat. However, an ovariole from in front to backward consists of the following zones: suspensory filament, and a zone of germarium and vitellarium, egg chamber, stalk chamber, and egg chamber and stalk are pedicles. And then common oviduct or vagina, the two oviduct unite to form a broad and common oviduct. It opens into female genital pouch through female genital pore. And broad or genital pouch, it is boat shaped whose anterior part from the genital chamber. Posterior part is called uthecal chamber, and it bears the utheca at the time of sexual reproduction. And collateral glands, there is a pair of white much branched collateral glands. The left is much longer than the right. And spermatheca, these are a pair of club shaped unequal sized, one spermathecal being larger than the other structure. And external genital of female, these lies consolated inside the gynaestrium. And reproduction in cockroach, it involves the following steps: compulsion generally take place in dark and during night, and then spermatophore formation and insemination and fertilization and formation of ootheca, and then lying of ootheca, then early embryonic development, hatching, and metamorphosis. Then interaction. Okay,
तो ये हमने कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल सिस्टम के बारे में जाना। एंड आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देन गुड बाय एंड टेक केयर।